हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीडल मैजिक। आज के ट्यूटोरियल में हम ये प्यारा सा पर्स बनाएंगे। वी आर गोइंग टू मेक दिस ब्यूटीफुल स्मॉल मिनी कॉइन पर्स। इट्स वेरी इजी टू मेक एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वील स्टार्ट बाय मेकिंग अ मैजिक सर्कल फर्स्ट। सबसे पहले हम एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। सो वील होल्ड द yarn this way, working yarn in the right hand and the tail here. Wrap it around your two fingers and make a cross. Hold it with your little finger like this. Slide the needle under the first loop and pull the second loop. And slide it off your fingers and chain one to secure the magic circle. You can even use other methods. There are many methods to make the magic circle, but I find this very easy. So I use this method. You can even use any other method that you find it comfortable. तो आप एक मैजिक सर्कल बनाएंगे इस तरीके से एंड देन यू हैव टू चेन थ्री करेंगे 1 2 3 एंड नाउ वी हैव टू मेक 16 डबल क्रोशे स्टिचेस इन द मैजिक सर्कल। हमें इस मैजिक सर्कल में 16 डबल क्रोशे स्टिचेस बनानी है। सो फॉर द डबल क्रोशे स्टिच yarn over करेंगे, गो इनटू द मैजिक सर्कल एंड पुल अप अ लूप। मैजिक सर्कल में जाके लूप पुल करेंगे। आपकी नीडल पे 3 लूप्स होंगी। yarn over, पुल थ्रू 2, 2 में से निकालेंगे, yarn over, पुल थ्रू 2, 2 में से निकालेंगे। So this is how you have to do your double crochet stitch. So we'll work 16 double crochet stitch in the magic circle. हमें 16 double crochet stitches बनानी है magic circle के अंदर और यही होगा हमारा round 1. This is our round 1. We have to just keep doing double crochet stitches until we have a total number of 16 double crochet stitches. तो जब तक हमारे पास 16 डबल क्रोशे स्टिचेस होती हैं हमें तब तक ये मैजिक सर्कल के अंदर डबल क्रोशे स्टिचेस करते रहना है। तो जब हमारे पास 16 हो जाएंगी फिर हम जॉइन करके इसे एक सर्कल की तरह बना लेंगे। फिफ्टीन एंड 16। तो मैंने 16 डबल क्रोशे स्टिचेस बना ली हैं। I've made 16 double crochet stitches in the magic circle. Now I'll pull the yarn tail and close the magic circle. तो ये जो yarn tail है इसको हम जैसे ही पुल करेंगे हमारा मैजिक सर्कल क्लोज हो जाएगा। इसे हम टाइटली पुल कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा मैजिक सर्कल हो गया क्लोज। नाउ वील डू अ स्लिप स्टिच ऑन टू द थर्ड चेन at the top here, the starting chain 3 that we made. We'll go on to the top, the third chain, top chain, and we'll do a slip stitch. तो जो top chain है, chain 3 जो हमने starting में बनाया था उसकी जो top chain है उस पे हम slip stitch करके इस circle को join कर लेंगे। So round 1 is completed. Now let's begin with the next round. Next round start करेंगे chain 3, 1 2 3 and now we don't have to work in the stitch that we did a join. We have to work from the next stitch. तो जहाँ पे हमने ज्वाइन किया था चेन 3 वहाँ पे चेन 3 के टॉप पे जहाँ पे हमने ज्वाइन किया था वहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे। उसकी साथ वाली जो स्टिच है डबल क्रोशे स्टिच है जो प्रीवियस राउंड का वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो वील वर्क 2 डबल क्रोशे स्टिच इन द स्टिच हियर, 1 एंड द सेकेंड वन इन द सेम स्टिच। 2 डबल क्रोशे स्टिच हमने एक ही स्टिच में कर लिए। Now 2 double crochet stitches in the next stitch. तो नेक्स्ट स्टिच में भी हम 2 डबल क्रोशे स्टिचेस करेंगे और इसी तरीके से हमने हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे स्टिच करने हैं इस राउंड के लिए। सो फॉर दिस राउंड वी हैव टू डू 2 डबल क्रोशे स्टिचेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टिचेस। So by the end of the round you must have 32 double crochet stitches because we had 16 in the previous round and we are doing 2 in each of the following stitches. So by the end we must have 32 डबल क्रोशे स्टिचेस। तो एंड में आपके पास 32 डबल क्रोशे स्टिचेस होंगी बिकॉज हमारे पास प्रीवियस राउंड की 16 है तो हम एक एक में 2 कर रहे हैं तो हमारे पास एंड में 32 डबल क्रोशे स्टिचेस होनी चाहिए। सो आई विल कंप्लीट दिस राउंड एंड देन आई विल टेल यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। मैं ये राउंड कंप्लीट करती हूँ, आप भी इसी तरीके से हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे स्टिच करते जाइए। जस्ट कीप डूइंग 2 डबल क्रोशे स्टिचेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टिचेस and then I'll meet you once I complete the round. And this is how you have to do for this round. I've completed this round by doing 2 double crochet stitches in each of the following stitches. मैंने हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे स्टिचेस किए हैं।
Now, like we did in the previous round, we'll go on the top of the chain 3 and we'll do a slip stitch. तो जो top वाली chain 3 जो chain थी हमने starting में बनाया था, उसकी third वाली chain पे हम slip stitch करके इस वाले round को भी join कर देंगे. So just make a slip stitch onto the third chain and your round 2 is completed. Now let's begin with the next round. Now in this round, we have to work only in the back loops. Only the front loops. I'm so sorry, only in the front loops, because we have to work in the back loops and make the second part. Now this is what we want actually. हमें इस तरीके का पीस बनाना है. तो जब हम सिर्फ फ्रंट लूप्स में वर्क करेंगे तो हमारे पास बैक लूप्स बच जाएंगी. तो फिर हम पीछे यार्न अटैच करके बैक लूप्स में भी वर्क करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का पीस रेडी हो जाएगा. So we want this type of piece which is already connected together. So we'll work in the front loops first and then we'll be left with the back loops and then we'll attach the yarn and work in the back loops as well. So we'll get a piece like this, and this is what we want. So now in this round we have to work only in the front loops. I'll show you if you're a beginner and you don't know what is the front loop and back loop. If you see closely, you can see these V's. So the line coming, the loop which is in the forward is the front loop and the loop which is at the back is the back loop, and we have to work only in the front loops. Only in the front loops. So अब हम सिर्फ front loops में work करेंगे. So we'll chain 3 करेंगे पहले 1 2 3 and not in the place where we have a join. We'll work from the stitch here. तो यहाँ पे जो stitch है वहाँ से work करेंगे. So we'll work in the front loop. Front loop में पहले एक double crochet stitch बनाएंगे. We'll work a double crochet stitch in the front loop and we'll work one more double crochet stitch in the same stitch. सेम फ्रंट लूप में हमने 2 डबल क्रोशा स्टिचेस कर लिए हैं. अब वी हैव 2 डबल क्रोशा स्टिचेस इन द फर्स्ट स्टिच फ्रंट लूप एंड नाउ वील वर्क 1 डबल क्रोशा स्टिच इन द नेक्स्ट फ्रंट लूप ऑफ द स्टिच. तो हमने अब एक डबल क्रोशा स्टिच किया है. नाउ इन द नेक्स्ट वी हैव टू वर्क 2 डबल क्रोशा स्टिचेस. रिमेंबर ओनली इन द फ्रंट लूप 2 डबल क्रोशा स्टिचेस करेंगे and in the next we have to work 1 double crochet stitch only in the front loop. फ्रंट लूप में ही सिर्फ वर्क करेंगे. नाउ 2 डबल क्रोशे स्टिचेस, 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे and in the next we'll work 1 double crochet stitch. This is the pattern for this round. इसी तरीके से आपने ये वाला राउंड कंप्लीट करना है. 2 डबल क्रोशे करना है, फिर एक करना है, फिर 2 करने हैं, फिर एक करना है. ओनली इन द फ्रंट लूप, सिर्फ फ्रंट लूप में करने हैं. So we have to keep repeating this. 2 double crochet stitches in one stitch and then 1 in the next, then 2 in the next and 1 in the next, and only in the front loop. So you have to make sure that you are working only in the front loops because we need the back loops to work for the other side. So this is how you have to keep on doing. I'll complete the round and then I'll show you what to do next. इसी तरीके से आप राउंड अपना कंप्लीट कर लीजिएगा. बट कंप्लीट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि हमने 7 स्टिचेस यहाँ पे छोड़ देनी है. सो आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट वी हैव टू लीव 7 स्टिचेस हियर. सो व्हेन यू कंप्लीट एंड देयर आर 7 स्टिचेस लेफ्ट, वी हैव टू fasten off. I'll show you how to do that. Now as you can see, there are 7 stitches left. 1 2 3 4 5 6 and 7. 7 स्टिचेस मेरे बचे हैं यहाँ पे राउंड कंप्लीट होने के लिए. एंड यहाँ पे मैं फासन ऑफ कर दूँगी बिकॉज मुझे अपने बैग का जो माउथ है वो इतना ही बड़ा चाहिए. अगर आपको छोटा चाहिए तो आप और कम स्पेस छोड़ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 7 स्टिचेस वाला स्पेस एकदम परफेक्ट रहता है. सो नाउ वील चेन 1 एंड वील फासन ऑफ. चेन 1 करके हम फासन ऑफ कर देंगे. व्हेन 7 स्टिचेस आर लेफ्ट, वील चेन 1 एंड वील फासन ऑफ. And then we can weave in these ends using a tapestry needle later. Now we have to work in the back loops. तो जो हमने पहले front loops में work किया था, अब उसकी जो back loops हैं ये आपको पीछे दिखेंगी. So you can see these back loops.
Now we have to work in these back loops exactly like we did this round. One in one stitch and two in the next. Same way we have to complete this. So we'll attach the yarn here where we have our chain 3. We'll attach the yarn here and then we'll start doing it around till here, and when we reach here then we'll fasten off. So we'll have a similar piece like this one. So we need 2 pieces. So you have to work 2 pieces of the same kind. So we'll have another piece of the same type like this after working this. So I'll show you how to do it. मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है. हमारे को ऐसे 2 पीसेस चाहिए, तो आपको ऐसे 2 बनाने पड़ेंगे. मैंने एक ऑलरेडी बना लिया है आपको दिखाने के लिए, और ये मैं आपके सामने बना रही हूँ. तो हमें ऐसे 2 पीसेस चाहिए, तो आपको 2 बनाने हैं ऐसे. तो अब मैं यहाँ पे जहाँ पे हमने ये चेन 3 करके ये राउंड स्टार्ट किया था, इसके बैक साइड पे यहाँ पे मैं इसे अटैच कर लूँगी. सो आई मेक अ स्लिप नॉट and we'll put the needle here in and we'll pull it, chain 3, 1 2 3, chain 3 करेंगे, and now we'll start working. So here in the first stitch we have to make 2 double crochet stitches like we did in the previous round. तो हम यहाँ पे 2 double crochet stitches बनाएंगे, 1 and 2 in the same stitch, and I'm working over the tail. मैं tail के ऊपर ही work कर रही हूँ ताकि मुझे बाद में weave नहीं करना पड़ेगा इसको. Then in the next we'll work 1 double crochet stitch. Next में हमने एक double crochet stitch किया. Now in the next we'll work 2 double crochet stitches. Next वाली में 2 double crochet stitch करेंगे, 1 and 2 in the same stitch. Then in the next 1 double crochet stitch, and in the next 2. So this is how you have to complete this round. इसी तरीके से आपने ये राउंड कंप्लीट करना है. You have to work only till here and then you have to fasten off. So I'll complete this by doing 1 double crochet stitch and 2 in the next, and then 1 in the next and 2 in the next by the time I reach here, and then I'll show you what to do. तो आप इसी तरीके से इसको कंप्लीट कीजिएगा यहाँ तक, जहाँ तक कि ये बैक लूप्स. अब इस तरफ से हम वर्क कर रहे हैं तो हमारे लिए फिर से फ्रंट लूप हो जाती है, बट जो हमने ये छोड़ी थी वहाँ पे जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, ये जहाँ तक ये है यहाँ तक हमने इसको वर्क करना है. एक में एक करना है, फिर नेक्स्ट वाले में 2 करना है, फिर एक करना है, फिर 2 करना है. इसी तरीके से यहाँ तक हमने कंप्लीट करना है. तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है. और लास्ट जहाँ पे चेन 3 जहाँ पे यहाँ पे जो जॉइन था चेन 3 वाला, वहाँ पे एक डबल क्रोशा स्टिच कर दिया है. एंड नाउ वील चेन 1 एंड फास्टन ऑफ. सो वील चेन 1 करेंगे and we'll fasten off, and using a tapestry needle we'll weave in these ends. ये जो जितने भी ends है इसको tapestry needle की मदद से हम weave in कर देंगे. और इस तरीके से ये जो पीस है, इस तरीके के हमें 2 पीस चाहिए, तो आपने ऐसा ही सेम बना लेना है. इसको मैंने weave in कर दिए इसके ends, और ये इस तरीके से दिख रहा है. So you have to make 2 pieces of the same kind. So what we did here, we have to make 1 more like this. So you should have 2 pieces like this, and we need 2 single pieces. सिंगल पीसेस आपको 2 चाहिए और 2 आपको ऐसे डबल पीसेस चाहिए. सिंगल पीस इस तरीके का है, ये देखिए, उसका सेम पैटर्न है जैसा मैंने ये वाला बनाया है, बट सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो हमने लास्ट वाली रो की थी, हमने उसमें फ्रंट लूप में वर्क किया था और फिर उसके पीछे उसके बैक लूप्स में भी वर्क किया था. इसमें हमने नहीं करना, इसमें हमने दोनों लूप्स में एक ही साथ वर्क करके एक सिंगल पीस बनाया. So this is how we have to make a single piece. We don't have, in the last row like we did here, we worked in the front and the back loops to give this double pattern, but here we don't have to do that. We have to work in both the loops like we did in the earlier rounds, and the pattern is the same, but I'll still show you how to do this one as well. So we need 2 of these double sided ones,
and 2 of the single ones. तो total we should have 4 pieces. तो हमें total 4 pieces होने चाहिए हमारे पास, 2 डबल वाले और 2 सिंगल वाले. तो अब मैंने सिंगल वाला एक ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि सिंगल वाला कैसे करना है. वैसे तो सेम पैटर्न है बट मैं स्टिल आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसे बनाना है. तो सिंगल वाले पीस के लिए, फॉर द सिंगल पीस इज द सेम, वी हैव टू मेक अ मैजिक सर्कल. सबसे पहले मैजिक सर्कल बनाना है हमने. chain 1 to secure the magic circle, and now chain 3, 1 2 3 chains बनाएंगे, and we'll work 16 double crochet stitches in the magic circle like we did earlier. तो जैसे हमने पहले किया था, हमें 16 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं मैजिक सर्कल के अंदर. ये हमारा होगा राउंड 1, जस्ट एग्जैक्टली द सेम लाइक वी डिड अर्लियर. जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल उसी की तरह हमने 16 डबल क्रोशे स्टिचेस बनानी है इसमें मैजिक सर्कल में. सिक्सटीन डबल क्रोशे स्टिचेस बना लिए मैंने. आई हैव फिनिश्ड मेकिंग 16 डबल क्रोशे स्टिचेस. नाउ वील टाइटन द मैजिक लूप and we'll slip stitch onto the third chain of the starting chain 3 that we made, and we'll join the circle. तो यहाँ पे हम slip stitch कर लेंगे और इसको हम join कर लेंगे. Now for the next round we'll chain 3 करेंगे, and like we did earlier we have to work 2 double crochet stitches in each of the following stitches here. तो हर एक stitch में हमने 2 डबल क्रोशे स्टिचेस करने हैं. तो अब जैसे हमारे पास इस राउंड में 16 डबल क्रोशे स्टिचेस हैं, हमारे पास नेक्स्ट वाली राउंड में 32 डबल क्रोशे स्टिचेस होंगी. सो वी हैव टू वर्क 2 डबल क्रोशे स्टिचेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टिचेस, एंड वील हैव 32 डबल क्रोशे स्टिचेस बाय द एंड ऑफ द राउंड. दिस हाउ वी हैव टू डू 1 2 in the same, then again 2 in the next, एंड सो ऑन. तो इसी तरीके से आपने 2 डबल क्रोशे स्टिचेस हर एक स्टिच में करके इस राउंड को कंप्लीट करना है. सो वंस यू कंप्लीट डूइंग 2 डबल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टिचेस, यू हैव टू मेक अ स्लिप स्टिच ऑन टू द थर्ड चेन एंड जॉइन. तो ये जो थर्ड चेन है उस पर हम स्लिप स्टिच करके इसे जॉइन कर देंगे. नाउ फॉर द लास्ट एंड फाइनल रो, व्हेन वी मेड द double the double side where we have both the sides worked up, we did only in the front loops, we worked only in the front loops. तो जब हमने ये डबल साइड वाले बनाए थे तो हमने सिर्फ फ्रंट लूप्स में वर्क किए थे, बट नाउ we'll work in both the loops. अब हम both the loops में वर्क करेंगे because we are making the single one. So we'll chain 3 at the beginning, chain 3 करेंगे, and now 2 double crochet stitches in the first stitch, 2 double crochet stitch बनाएंगे first stitch में, and 1 double crochet stitch in the next stitch में 1 double crochet stitch बनाएंगे, and we are working in both the loops. Then again 2 double crochet stitch in the next and 1 in the next. तो हम इसी तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे. 2 डबल क्रोशे स्टिच एक में करेंगे, फिर एक डबल क्रोशे स्टिच नेक्स्ट वाली स्टिच में करेंगे, and we have to work this round until we are left with 7 stitches, and when the 7 stitches are left we have to fasten off. तो जब हमारी 7 stitches left होंगी तो तब हमने इसको fasten off कर देना है जैसे हमने पहले किया था. So this is how you have to work 2 double crochet stitches, then 1, then 2, then 1 2 1 until 7 stitches are left, and when 7 stitches are left we have to chain 1 and fasten off. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 स्टिचेस बची है. यू कैन सी 7 स्टिचेस आर लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एंड नाउ आई एम गोइंग टू चेन 1 एंड फास्टन ऑफ. तो जब 7 स्टिचेस बच जाएंगी तो हम चेन 1 करके फास्टन ऑफ कर देंगे. उन 7 स्टिचेस को हम वर्क नहीं करेंगे, सो वी डोंट हैव टू वर्क दोज 7 स्टिचेस. नाउ यू हैव टू मेक 2 ऑफ दिस पीस and 2 of the, so these are the single pieces, we need 2 of the single pieces and 2 of the double pieces. So total we need 4 pieces, and when these pieces are ready then we have to join them together. So make all the pieces and then let's join. So this is how I weave in all my ends. So the yarn tail is little short, so I put the needle where I want my yarn to weave,
तो जहाँ मुझे चाहिए मेरी यार्न वीव हो जाए, अंदर सिक्योर हो जाए, मैं वहाँ अपनी नीडल डाल देती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नीडल जो यार्न हम छोड़ते हैं वो कम रह जाती है, थोड़ी रह जाती है. देन आई थ्रेड माई नीडल and pull it through. You can just go in couple of times if you have a longer tail, and you can cut the extra yarn. Extra yarn को हम cut कर देंगे, and you have to weave in all the ends of all the 4 parts. These are the 2 single ones and 2 double. ये 2 single और 2 double हमारे पास हैं. ये 2 single, ये 2 double. इसके सब मैंने weave in कर दिए हैं ends. Now we have to join all these parts together. अब हमको ये सारे parts एक साथ join करने हैं. So firstly we'll take a double part, and we'll take this double part and we'll join it with a single part on one side. Okay, then we have to join the other double part on the other side and the single part at the end. This is how we have to join it. So I'll show you once again. We have to join one single part to the double part and the other single part to the other double part, and then join both the double parts together. I have just pulled the other part up so that it doesn't get stitched between. I have only taken the single part and one part of the double one, and now I'll be joining it. So we'll make a slip knot first to attach the yarn. पहले हम slip knot बनाएंगे, एंड ये डबल पार्ट का जो एक पार्ट है उसको आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल कर लीजिएगा ताकि वो साथ में स्टिच ना हो जाए. हमें सिर्फ एक ही पार्ट सिंगल पार्ट से जॉइन करना है. सो विल पुट द नीडल इन द फर्स्ट stitch of both the parts and we pull the slip knot. Chain 1 to secure. Go in the same stitch में हम पहले जाएंगे और एक सिंगल क्रोशे स्टिच बना देंगे. Now we'll go in the next stitch. We'll take the front loop and the back loop. We'll pull up a loop. We'll twist it once and then we'll pull through. So this will give a nice design. Then again we go into the next stitch, front loop of the front part and back loop of the back part. Pull a loop, twist it once and pull through. Then again take the front loop of the front part and back loop of the back part, pull up a loop, twist it once, twist the needle once, yarn over and pull through both. This is how you have to join it because this gives a nice texture. Then go into the front part of the front loop of the front part and back loop of the back part, pull up a loop, twist the needle once, yarn over, pull through both. इसी तरीके से हम ये कंप्लीट करेंगे. फ्रंट पार्ट का फ्रंट लूप, बैक पार्ट का बैक लूप लेंगे, यार्न ओवर करके लूप पुल करेंगे, नीडल को एक बार ट्विस्ट करेंगे, यार्न ओवर करके दोनों में से निकाल लेंगे. देन अगेन फिर से इसी तरीके से मैं दिखा देती हूँ. फ्रंट पार्ट का फ्रंट लूप लेंगे, बैक पार्ट का बैक लूप लेंगे, यार्न ओवर करके लूप निकालेंगे, एक बार नीडल को ऐसे ट्विस्ट करेंगे, यार्न ओवर करके दोनों में से निकाल देंगे. So this is how you have to complete joining these two parts.
इसी तरीके से हम ज्वाइन करेंगे और इस तरीके का इसमें डिज़ाइन आएगा. सो यू हैव टू ज्वाइन इट कम्प्लीटली टिल हियर, लीविंग दिस स्पेस ओपन. तो यहाँ तक हमने इसको ज्वाइन कर देना है. तो ये राउंड यहाँ तक ज्वाइन करना है और फिर मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है. सो यू कैन कंप्लीट टिल हियर एंड देन आई विल शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो ये वाला पार्ट मैंने ज्वाइन कर दिया है, ये देखिए, आई हैव ज्वाइन दिस पार्ट एंड नाउ आई विल चेन वन एंड आई विल फास्टन ऑफ. चेन वन करके मैं इसे फास्टन ऑफ कर दूंगी और फिर इस यार्न को भी हम नीडल की मदद से वीव इन कर देंगे. सो वी कैन टेक अ टेपेस्ट्री नीडल एंड वीव इन this yarn end. Now what we have to do is we have to join these two parts the same way like we did this. We'll keep the single part on the double part and we'll join both the ends, leaving the other one, because this part we have to join with this part. Okay, I hope you're able to understand. We have to join only these two parts because the double part has two parts and one we have to join it with the other side like this. So we'll join these two as well. इन दोनों को भी हम join कर लेंगे. एक single वाला जो है हमारा उसको हम ये double वाले के एक side से join कर देंगे. उसके बाद ये जो दो parts बच जाएंगे double वाले के, उनको आपस में join कर देंगे. सो इसी तरीके से बाकी भी हमने ज्वाइन करने हैं. तो एक बार ये पूरा ज्वाइन हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है. सो यू कैन ज्वाइन इट इन द सेम वे और यू कैन इवन ज्वाइन इट विद अ टेपेस्ट्री नीडल और विद अ सिंगल क्रोशे, नॉर्मल सिंगल क्रोशे स्टिच. इट्स टोटली अप टू यू. सो लाइक वी अटैच दिस पार्ट, द सिंगल वन टू द डबल, leaving one side. The similar way we have to join this. We leave one side of the double sided part and join the single one to one side of the double. Okay, and then we'll join the parts that are left of the doubles together like this. So after joining, what we have to do, I'll show you. You can just join it accordingly however you like with this tapestry needle or with a normal single crochet stitch. It's totally up to you, or a slip stitch. It's totally up to you. So after joining all this, then I'll show you what to do next. ये देखिए मैंने सारे पार्ट्स को ज्वाइन कर दिया है. तो हमारी 3 पॉकेट्स बन के रेडी हो गई हैं. यू कैन सी वी हैव 3 पॉकेट्स नाउ. दिस इज हाउ इट्स लुकिंग नाउ. एंड यू कैन यूज़ द टेपेस्ट्री नीडल एंड वीव इन दीज एंड्स. ये जो भी एंड्स हैं इसको हम लास्ट में वीव इन कर सकते हैं. अब हमने क्या करना है, हमने इसका जो बंद करने का जो पार्ट है वो बनाना है. तो ये पीछे का हिस्सा जो, अब वैसे तो ये सेम ही है, आगे पीछे का दोनों का सेम है. आप किसी भी साइड से बना सकते हैं. तो किसी भी साइड से ये जो 7 स्टिचेस हमने छोड़ी हैं, जो सबसे पीछे वाला पार्ट होगा उसकी जो 7 स्टिचेस हमने छोड़ी है, अब हम वहाँ पे सिंगल क्रोशे स्टिच करके अपना आगे का स्ट्रैप बनाएंगे जो कि इसको बंद करने में काम आएगा. सो नाउ विल मेक अ स्लिप नॉट फर्स्ट and the part which is at the back we'll just go in. We have 7 stitches here, so we'll work 7 single crochet stitches here. Chain 1 to secure first, and 1 2 3 4 5 6 7. So you can see we have 7 stitches. So we'll go in the first stitch, we'll make a single crochet stitch. We'll go into the second stitch, we'll make a single crochet stitch. हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. हमारे पास यहाँ पे 7 स्टिचेस जो हमने छोड़ी हैं हर पार्ट में, उस वाले हिस्से में हम यहाँ पे स्ट्रैप बनाएंगे. 5 6 and 7. 1 2 3 4 5 6 7. Okay, now chain 1, turn your work and work 7 single crochet stitches onto this. तो इसी पे हम दोबारा से 7 single crochet stitches करेंगे. 2 3 4 5 6 7. Chain 1, turn your work,
and work 7 single crochet stitches again. 1 2 3 4 5 6 7. Then chain 1, turn your work and work these 7 single crochet stitches again until it is as long as it's coming in front, and you can close it with a button और with a stitch button और with a magnet. तो इसको हमने इतना लंबा बना देना है, ये रोज को तब तक इतना लंबा बना लेना है कि ये आगे आके यहाँ पे बंद हो सके. तो हम यहाँ पे चाहे बटन लगाएं, चाहे टिच बटन लगाएं, चाहे मैग्नेट लगाएं, जो भी लगाएं, उससे ये यहाँ तक पहुँच जाए, उतना लॉन्ग हमने इसको बनाना है. तो आई थिंक 10 से 12 रोज काफ़ी होंगी. तो आप इसको इतना लंबा बना लीजिए, मैं भी इसको इतना लंबा बना के फिर हम देखते हैं कि ये कैसा लगता है. आई हैव डन 9 रोज ऑफ सिंगल क्रोशे स्टिचेस. मैंने 9 रोज कर ली है सिंगल क्रोशे स्टिचेस की, एंड एज यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट द करेक्ट साइज दैट आई वांट. इफ़ यू वांट यू कैन इवन डू मोर, बट फॉर मी इट्स फाइन. मेरे लिए बिल्कुल सही साइज है. नाउ विल मेक द फ्रंट पोर्शन ऑफ द स्ट्रैप. सो चेन 1, turn your work and skip the first 3 stitches and go into the 4th one and make 8 double crochet stitches. तो 4th वाली स्टिच में हम 8 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 and 8, and slip stitch onto the last stitch here. That's it. तो ये हमारा ये राउंड सा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है. नाउ चेन 1 एंड फास्टन ऑफ. चेन 1 करके हम फास्टन ऑफ कर लेंगे. And we can weave in this end using a tapestry needle. So I'll just go in a couple of stitches. बहुत ही इजी है और बहुत ही कम ऊन लगती है इसे बनाने में, और बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है. अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ पे वर्क करूँ, लाइक अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. So this is how I weave in my end, and now we'll cut the extra yarn. So the purse is ready. ये देखिए पर्स हो गया है रेडी. Now only thing we have to do is we have to add a button. Now you can add a touch button, a magnetic button or a normal button. It's totally up to you. तो मैं stitch button add करने वाली हूँ. So I'm going to add the stitch button using needle and thread. तो सुई धागा की मदद से हम इसे लगा सकते हैं. आप अपनी मर्ज़ी से जैसे आपको चाहिए आप उस हिसाब से लगा सकते हैं, जो भी बटन आप चाहते हैं लगाना. तो पहले मैं एक साइड का लगा रही हूँ. मैंने टिच बटन लगा दिए हैं, ये देखिए, और पर्स के ऊपर मैंने ये प्यारा सा मोती लगा दिया है जो मेरे पास पड़ा था. ये देखिए इस तरीके के ये हेयर बैंड के ऊपर भी लगते हैं ऐसे. तो ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया. आप चाहे तो बटन भी लगा सकते हैं, कुछ और भी लगा सकते हैं, जिससे ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा. और आप चाहें तो आप ऐसा छोटा सा चेन भी लगा सकते हैं साइड पे. इफ़ यू वांट यू कैन ऐड अ चेन एट द साइड्स, but since it's a coin purse you have to put it in your purse itself, so no need for that, but it's totally up to you. This is how it looks. ऐसा दिख रहा है, ये देखिए.
एंड इसको खोलेंगे तो ये देखिए अंदर इसके ये 3 पॉकेट्स हैं. So I hope you liked the tutorial. Thank you so much for watching. Do subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon as you'll be notified whenever I upload my new video. Thank you so much for watching. Be happy, stay safe, keep crocheting. Bye bye.